Good morning, everyone. We are learning electoral politics, and in our previous lecture, we have learned about what is election, what type of election do we conduct in our country, and a story of Haryana, that means Chaudhary Devi Lal Singh ji. In that particular story, we have learned that election conduct होना ही important नहीं है. What is important, that election should be conducted in a democratic way. Now the question arises that what makes an election democratic? How we can say that elections are conducting in a democratic way? So few features are there. What makes an election democratic? Firstly, everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. अब इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. If you people remember the topic French Revolution, there also I told you that everyone should get the right to cast the vote in election, irrespective of their caste, of their color, of their gender, of their religion. किसी भी बेसिस पे कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए एंड एवरी एडल्ट सिटीजन मस्ट गेट राइट टू कास्ट वोट इन इलेक्शन. इसको बोलते हैं बेटा यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज. एंड इफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज प्रेजेंट, दैट मेक्स आर इलेक्शंस डेमोक्रेटिक. Secondly, there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choices to the voters. That means there should be no compulsion that you have to cast your vote to a particular party only, and you people should be free to contest in election. ऐसा नहीं होना चाहिए कि only few peoples are assigned, that every time whenever election will be conducted, only those people will take part. Everyone, every citizen of India should be free if they are fulfilling the criteria to contest in an election. तो हर कोई इलेक्शन में पार्ट ले सकता है और उनको पार्ट लेना चाहिए. एंड वी पीपल आर फ्री टू मेक आवर चॉइस. सपोज इफ आई वांट टू कास्ट माय वोट टू पार्टी ए, देन आई एम फ्री. नो वन कैन आस्क मी और नो वन कैन फोर्स मी टू कास्ट माय वोट टू अनदर पार्टी. These 2 points makes our election democratic, but still some points are there. Equal right to vote, that means everyone, whether poor, whether rich, whether middle class, whether upper class, whether elite class, सबको equal right होना चाहिए वोट का. that means एक ही बार वोट कास्ट करने के लिए. ऐसा ना हो if someone belongs to elite class और upper class, और if someone belongs to ruling class, तो उनको बोल दिया जाए नहीं, you are having the chance to cast vote as many times as you want. ये नहीं होना चाहिए. सबको एक बार ही चांस मिलना चाहिए एंड सबके वोट की काउंटिंग इक्वल होनी चाहिए. इफ़ आई एम कास्टिंग माई वोट, देन ऑल्सो इट शुड बी काउंटेड एज अ वन वोट. एंड इफ समवन हु इज़ एन IAS ऑफिसर और हु इज़ अ पॉलिटिकल मिनिस्टर, देन ऑल्सो इफ़ ही इज़ कास्टिंग द वोट, तो उसके वोट की वैल्यू भी वन काउंट होनी चाहिए. Right to choose at regular intervals, that means for a democratic election, the very important feature is that the election should be conducted after regular interval. There should be a consistency, that means there should be a continuity. That means अगर elections conduct हो रहे हैं हर 5 साल बाद, then after every 5 years election should be conducted. उसमें कोई भी ब्रेक नहीं होना चाहिए कि once तो एक बार 2011 में इलेक्शन हो गए, उसके बाद 10 साल हो गए लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहे हैं. तो एक रेगुलर इंटरवल होना चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए. Preferred contestant is elected, that means whom we people have chosen. हमने जिसको वोट दिया है, मेजॉरिटी ने जिसको सपोर्ट किया है, that particular party will only form the government. ऐसा ना हो कि जिसको लोगों ने नहीं चुना है और उसको हम क्या करें, उसको हम पावर दे दें. नहीं, जो लोगों ने जिनको चूज़ किया है, लोगों ने जिनको इलेक्ट किया है अपना रिप्रेजेंटेटिव, उसी पॉलिटिकल पार्टी को चांस मिलना चाहिए टू फॉर्म द government. Elections in a free and fair manner, that means everything should be free and fair. No one should be forced to cast the vote, or every person is free to contest in elections. So this was all the points which makes our elections
one more thing is there, if our elections are taking place, or if we conduct elections in our country, then one more thing is there to keep in mind, that then our political competition will also be there, because too many parties are there and everyone wants to win in election. तो ये एक पॉलिटिकल कंपटीशन हो जाता है. तो क्या ये पॉलिटिकल कंपटीशन हेल्दी होता है, और इज़ इट गुड टू हैव अ पॉलिटिकल कंपटीशन एट द टाइम ऑफ इलेक्शंस? लिसन, दिस बिकॉज एवरी कॉइन हैज़ टू फेसेस ना, तो हम इसको भी टू फेज में डिवाइड करते हैं. दैट मीन्स इट हैज़ मेरिट्स एज वेल एज इट हैज़ सम डिमेरिट्स ऑल्सो. फर्स्टली वी कैन टॉक अबाउट demerits. Clearly, an electoral competition has many demerits. It creates a sense of disunity, fractionalism, and in everyday society. That means if there is a competition, then surely everyone wants to play, or everyone will use some tricky things to win the election. Some will say that give me the vote because I belong to your caste. Give vote to me because I belong to your community. Give vote to me because I am from your religion. इस वजह से क्या होता है, डिफरेंट सेक्शंस डिवाइड हो जाते हैं सोसाइटी के. Someone will say कि मेरे रीज़न का जो है लीडर हैं, मैं उनको वोट दूंगा. Someone will say मेरे कास्ट के हैं. Someone will say कि ये मेरे रिलीजन के हैं. तो ये सोसाइटी में डिवीज़न का एक रीज़न बन जाता है. Some candidates and parties, they use dirty methods to win elections, as like they use sometimes they use bombarding of fake promises also. मतलब हम अगर जीत के आ गए, देन हम क्या करेंगे, सारा लोन माफ़ कर देंगे. हम आपको स्टूडेंट्स के लिए, एग्रीकल्चर सेक्टर्स के लिए हम पॉलिसीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे. वी विल गिव जॉब टू एवरीवन. मीन्स वो प्रोमिसेस भी बोल दी जाती हैं जो रियलिटी के ग्राउंड पे इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. People who wants to serve the country avoid entering this field owing to unhealthy competition. And इसमें क्या होता है, the one who is really deserving, who in reality want to serve his country और हर country, but जब वो ये dirty competition देखते हैं, dirty tricks देखते हैं, तो वो बोलते हैं, ये सोचते हैं कि रहने दो, क्योंकि मेरे बस की बात है नहीं कि हम इस dirty tricks को यूज़ कर पाएँ, प्ले कर पाएँ. So it's better कि I am far away from politics. तो deserving candidate जिसको dirty ट्रिक्स प्ले करना नहीं आती हैं, वो कहीं ना कहीं कंपटीशन से आउट हो जाता है. सो दीज आर ऑल डिमेरिट्स ऑफ पॉलिटिकल कंपटीशन. बट इफ़ डिमेरिट्स आर देयर, तो मेरिट्स भी ज़रूर होंगी. देन व्हाट आर द मेरिट्स?